friends, welcome back to another video tutorial from Naeem Bukhari YouTube channel. So today we are going to discuss what are the methods which we can use to assess the variable gene expression. Means one gene can express itself into variety of fashion, into variety of proteins in different individuals or in a different cells. जैसे तमाम ह्यूमन बीइंग्स हैं तो उनका जीनोमिक मेकअप तो सेम है, लेकिन क्या होता है कि वो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में वो जीन्स डिफरेंट तरह से एक्सप्रेस होते हैं, जिसकी वजह से हम लोगों के पास उन इंडिविजुअल में या ह्यूमन बीइंग्स में बहुत डाइवर्सिटी एग्जिस्ट करती है कि नो वन ह्यूमन बीइंग्स आर सिमिलर टू ईच अदर. Even in case of identical twins, there are some dissimilarities. Okay, so then we can say what are the methods how we can assess variable gene expression. कि अगर हम देखना चाहते हैं एक सेल में जो जीन है, सपोज एक इंडिविजुअल हम लोग के पास A है और एक इंडिविजुअल यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, सपोज देयर इज अ A इंडिविजुअल एंड देयर इज अ B इंडिविजुअल, राइट. ओके, दिस वन इज एंड दिस वन. अब इफ़ वी कैन से कि इस इंडिविजुअल में भी जीनोम सेम है, इसमें भी सेम है, लेकिन दोनों में क्या होता है कि जो एक्सप्रेस जब जीनोम होता है तो जो प्रोटीन्स बनती है इसकी भी बॉडी मॉर्फोलॉजी जो है वो डिफरेंट है और इसकी भी बॉडी मॉर्फोलॉजी डिफरेंट है कि ये एक अलग डिफरेंट इंडिविजुअल है, वो इससे बिल्कुल डिसिमिलर है. अब वजह क्या है कि दोनों का जीनोमिक मेकअप तो सेम है बट वो एक दूसरे से डिफरेंट है. अब इसकी रीज़न क्या हो सकती है, वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों है? तो उसकी रीज़न ये हो सकती है कि एक्चुअली ड्यू टू वेरिइंग जीन एक्सप्रेशन, वेरिएबल जीन एक्सप्रेशन की जीन्स डिफरेंट तरह से एक्सप्रेस हुए. अब हम कौन कौन से मेथड्स हैं जिससे हम ये फाइंड कर सकते हैं कि इन जो डिफरेंट दो इंडिविजुअल हैं इनमें जो जीन्स हैं वो किस तरह से एक्सप्रेस हुए हैं, कैसे डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस हुए हैं. तो कौन से मेथड्स हैं जिनसे हम एक्चुअली उन जीन सीक्वेंसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो कि डिफरेंट तरह से जीन्स को एक्सप्रेस करवाने में सपोर्ट कर रहे थे. वो सीक्वेंसेस बेसिकली वो जीनोटिपिक सीक्वेंसेस जो कि फिनोटिपिक इफेक्ट्स जो है वो डिफरेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं दो डिफरेंट इंडिविजुअल्स में. ओके, द फर्स्ट टेक्निक वी यूजली स्टडी इज नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग. अब नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग से क्या मुराद है कि ये बेसिकली एक सिंगल सेल जो है, एक सिंगल सेल का हम क्या करते हैं कि जो जीनोम है उसको हम स्टडी करते हैं. सिंगल सेल जीनोम को स्टडी करने के लिए नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग टेक्निक यूज़ की जाती है. उसमें हम क्या करते हैं कि एक ह्यूमन है, ह्यूमन में से हम सेल ह्यूमन के सेल्स लेंगे, ब्लड सेल्स हैं या कोई और बॉडीली सेल्स हैं जिनसे हम डीएनए एक्सट्रैक्ट कर लें. तो हम वो जो डीएनए है वो हम उसको जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो डीएनए एक्सट्रैक्ट करने के बाद फिर हम उसमें से जो टारगेट जीन है या जो म्यूटेटेड जीन है या जिस जीन को हमने लेबल किया हुआ है जिसके फिनोटिपिक इफेक्ट्स हम देखना चाह रहे हैं तो उस जीन को हम बेसिकली हम टैग कर लेते होते हैं. ओके, फिर टैग करने के बाद हम उसकी सीक्वेंसिंग करते हैं तो हम एग्जैक्ट जो बेसिस हैं वो फाइंड कर लेते हैं नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग. इफ़ वी आर गोइंग फॉर NGS सीक्वेंसिंग यूजली वी डोंट नीड the PCR or primer because we are directly going to sequence. In this step we don't need any primers because we are directly going for the sequencing of a whole genome, right? If we will be going to perform Sanger sequencing, so in case of Sanger sequences we usually need primers because we are going to amplify specific part of the gene. But in case of next generation sequencing or a whole exome sequences, we are actually going to study the number of genes present on the whole exome or on a whole genome. That's why we usually don't need primers to amplify a specific segment of the DNA or gut or target gene. So NGS next generation sequencing can be used to detect or to choose or to select or to identify a particular gene, and its phenotypic effects can be then observed by in vitro experimentation. Okay, further capable of tracking cell heterogeneity and determination of cell subpopulations using single cell RNA sequencing. तो सिंगल RNA sequencing टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं. इस टेक्निक को हम यूज़ करके क्या कर सकते हैं कि हर इंडिविजुअल सेल एक सेल में जो RNA है उसको हम स्टडी कर सकते हैं और हमें पता चलेगा कि एक सेल और दूसरा सेल वो कैसे बन रहे हैं, उनमें कौन कौन सी प्रोटीन्स बन रही हैं, लेकिन जो mRNA मैसेंजर RNA पे उन पे वो जीन कैसे एक्सप्रेस हो रहे हैं जिससे जो डाइवर्सिटी है प्रोटीन्स में वो आ रही है और वो प्रोटीन्स किस तरह वेरिएंट फैशन में एक्सप्रेस हो रही हैं. सो सिंगल सेल RNA सीक्वेंसिंग से मुराद यही होती है कि आपके पास सिंगल एक सेल है उसके अंदर आपने mRNA की बेसिकली mRNA को स्टडी करना है, mRNA के सीक्वेंसेस को स्टडी करना है. एक और टेक्निक है हम लोग पास कन्वेंशनल RNA सीक्वेंसिंग वेयर डिफरेंशियल एक्सप्रेशन एनालिसिस इज द इंटीग्रल कंपोनेंट. तो कन्वेंशनल RNA सीक्वेंसिंग में हम क्या करते हैं कि जो नॉर्मल सेल हैं या एबनॉर्मल सेल्स हैं उनमें भी हम
आरएनए के लेवल को देखा जाता है या उनको कंपेयर किया जाता है। और इसमें हम लोग वो कहते हैं कि डिफरेंशियल एक्सप्रेशन एनालिसिस, हम देखते हैं कि एक सेल में सपोज एक म्यूटेटेड सेल है, हम उसमें आरएनए को स्टडी कर लेंगे या उसमें एक जीन को स्टडी करेंगे और एक नॉर्मल सेल में, फिर हम उनको कंपेयर कर लेते हैं और इससे हम एनालिसिस करते हैं कि कौन सा जीन एक सेल में म्यूटेटेड है लेकिन दूसरे में वो एक्सप्रेस हो रहा है और वो स्पेसिफिक प्रोटीन बना रहे हैं। These are actually methods. The most common method or the most important method for single cell sequencing includes like next generation sequencing, Sanger sequencing, and similarly another method which is known as whole exome sequencing as well. These are the methods which we can opt for the study of variable gene expression in a single cell or at the cellular level. Further, here I will quote an example just to understand, make it easy for you to understand the concept. Like see over here, drug effects on a population. Suppose we are giving a drug population, okay? In population, you know, there will be number of peoples, like here are the peoples, ape group, okay? We will give drug to all of them. So what will be happening? Even all the humans have same genome. Why they will perceive different effects of the drug on their body? Either their genome is same. Think about it, okay? See over here, these are the group of individuals, or there is a population. You will administer drug to all of them. What will happen? In some individuals drug will show no response, in some individual drug will show good response, while in some there would be no response at all or there would be a bad response. This could be possible. What is the reason? Even all the humans have same genomic makeup, okay? The reason is that their genes are expressing in a different fashion in all the individuals, and they have different proteins in their body. Some of the proteins can bind with the drug molecules, some of the proteins cannot bind with the drug molecules. Where if some proteins will able to bind with the drug molecules, they can produce denaturation reaction or Leydig reactions. That's why we can say drug will be showing a different effect on different individuals, right? I think you people got the idea. Similarly, you can see over here genetic variability, external factors, expression variability. So here I'm going to just disclose some of the factors, means what is the etiology of variable gene expression. So the etiology includes like genetic variability. All the individuals in a population have a different, we can say parents and ancestors. Their genetic traits are different, okay? Their genome is the same, but the traits, the genes on their genome are somehow different. Their expression patterns are determined by their parents, okay? By their parents' genome, okay? That's why we can say either they will be autosomal dominant or either they will be autosomal recessive. These patterns of inheritance are actually determined, and they get those patterns from their ancestors. That's why we can say there would be a genetic variability among all the individuals or among all the peoples in a population. Similarly, external factors. There are a lot of external factors which includes like your diet, your external environment, like the temperature, like exposure to sunlight. As you people know, if a person is exposed to sunlight in a day, it means his cells will be growing at a greater rate. But if a person who is never exposed to sunlight, his or her cell will be growing at a different rate. That's why we can say there is role of sunlight or external environmental factor in the gene expression as well. So there are factors which can impact the expression of genes or variable expression of the gene. So that's why if a person who is exposed to sunlight, there will be a different pattern of gene expression. But if a person is not exposed to sunlight, it means there will be another pattern of same gene expression in a different individual. So that's all about how genes express themselves in a variable fashion. Expressive variability you can see over here. So this is regarding how genes are expressing themselves in a variable fashion in a group of people or in a population, okay? Here are the example drug effects on a population. Means once we administer a drug on a group of people, so they will perceive a different response. The reason is that because they have same genomic makeup, but these genes are expressing in a different fashion. Once their genes are expressing in a different fashion, they are trying to produce a variety of protein or a different sort of protein, and the different sort of protein can only bind with a specific drug molecule, and that's why there would be a varying response of individuals against a drug. There is an example of stem cells, okay? The number of stem cells in all the individuals are same,
for somehow, means there is only a one gene which is responsible for the stem cell production in all the human beings, but the varying expression of the genes which are responsible for the stem cells production leads up to the different antigenicity or blood groups in the individual. Like some people have A blood group, some people have O blood group, some people have B blood group, some people have Cal blood group, some people have Duffy blood group, some people have P blood group, some people have M blood group, and some people have N blood group. So this diversity exists actually due to presence or due to expression of genes present within the stems responsible for the stem cell production. So that's why we can say stem cells are produced in all of the individuals in a group of population from the same gene or from the same chromosomes to whom genes are located for the stem cells production. But the expression of those genes which are responsible for stem cells in different individuals is different. Due to variable expression in different individuals, we can say the variety of antigenicity of the blood cell or stem cell is determined based on individual bodily factors and environmental factors and some other factors including diet and exposure to the environment. Okay, further moving towards the last slide, which is the conclusion. So we have to discuss, see over this image. Okay, this is a rat, this one is, and this one. There is a difference in there is a color difference in all the three rats, and there is also a difference in their ear structure. Okay, you can see over here, you can observe. Actually, all these three rats have the same genomic makeup, but what is the reason why their bodily color is different? Actually, due to variable expression of genes in their body. This is the reason. That's why rats are different in their phenotypic appearance, but their genomic makeup is the same. So if you have any question regarding this lecture, regarding variable expression of the genes, you can ask me. So stay tuned, to my channel. If you want to watch more videos or want to hear more videos, press the bell icon and subscribe my channel for more videos. So stay blessed. Allah Hafiz.